हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम टू माय किचन चैनल। आज આપણે બનાવવાના છે સુપર ટેસ્ટી એવા પુલડા કહી શકો કે તમે હાંડવો કહી શકો, કોઈ પણ કહી શકો એવી સુપર ટેસ્ટી એવી આ રેસીપી અને એકદમ હેલ્ધી એવી બાળકોને પણ ખૂબ જ ભાવશે। બાળકોથી લઈને મોટા સુધીને બધાને જ ખૂબ સરસ એવી લાગશે। तो एकदम हेल्दी एवी रेसिपी आज हूँ बतावानी छूँ। तो आपणे वीडियो स्टार्ट कर लीए। अने जो तमे अमरी चेनल पर प्लीज नवा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करवानुं बिल्कुल पण भूलताई नहीं। तो आपणे एक मोटी वाटकी आपणे बटेटाने एकदम सरस रीते धोई अने आ रीते चॉप करी लीधा छे। तो आपणे तेने मिक्सर जार में एड करीशुं। त्यारबाद आपणे 3 तीखी मिर्ची, एक आदूनो टुकड़ो अने लसण एड करीशुं स्पाइस प्रमाणे। त्यारबाद एक मोटी वाटकी दूधी एड करीशुं, तेने पण मैं धोई अने चॉप करी लीधी छे। त्यारबाद हवे आपणे अर्धो कप दही, खाटू दही एड करीशुं। त्यारबाद तेमां थोड़ुं पाणी एड करीशुं अने एकदम सरस एवो स्मूथ एवो बेटर तैयार करी लईशुं। तो तमे जोई शको छो कि एकदम स्मूथ एवो बेटर बनीने रेडी थई गयुं छे। तो हवे आपणे एक मोटा बाउल में तेने काढी लईशुं। हवे आपणे एक मोटी चमची जेटला आपणे धाणा एड करीशुं। त्यारबाद स्वाद अनुसार एक चमची मीठुं, एक चमची अजमो, एक चमची हळदर, अर्धी चमची जीरुं एड करीशुं, अर्धी चमची लाल मरचुं पाउडर तीखास प्रमाणे। त्यारबाद एक मोटी वाटकी चणानो लोट एड करीशुं अने एक वाटकी रवो एड करीशुं। जे नॉर्मल रवो होय छे ते एड करीशुं अने आपणे बधुं ज एकदम सरस रीते मिक्स करी लईशुं। तो तमे जोई शको छो कि एकदम सरस एवो मिक्स थई गयुं छे। तो हवे आपणे तेमां अर्धी चमची बेकिंग सोडा एड करीशुं अने बधुं ज एकदम सरस रीते मिक्स करी लईशुं। तो तमे जोई शको छो कि बेटर एकदम सरस एवुं ठीक एवुं बनीने रेडी थई गयुं छे। तो हवे आपणे गैस पर कढ़ाई मूकीशुं नॉनस्टिक अने आपणे तेमां एक मोटी चमची तेल एड करीशुं, अर्धी चमची राई एड करीशुं, अर्धी चमची मीठा લીમડાના પાન અને अर्धी चमची આપણે તલ એડ કરીશું સફેદ અને આપણે જે બેટર હતું તે આપણે એડ કરી દઈશું 2 મોટા ચમચા અને આ રીતે ફેરવી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે આપણે ફેરવી લેવાનું છે। તો તમે આને હાંડવો કહેશો, પુલડા કહેશો, શું કહેશો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। तो આપણે ડીશ ઢાંકી દેવાની છે અને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે। હવે આપણે તેની સાઈડ પલટાવી લઈશું। 2 થી 3 મિનિટ એક બાજુ શેકાઈ જાય એટલે તેને ધીમા તાપે તેને ફરીથી બીજી સાઈડ શેકી લેવાનું છે અને તેને આપણે જોઈ લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો પુલડો એકદમ સરસ એવો બનીને રેડી થઈ ગયો છે। તો મારે થોડો એવો पुलड़ो थोड़ो एवो बरी गयो। तो हवे आपणे तेने काढी लईशुं फ्रेंड्स अने हवे आपणे तेमां आपणे बीजुं बेटर ने एड करी दईशुं अने उपरथी तल एड करीशुं, मीठा લીમડાના પાન एड करीशुं अने तेने ढांकी दईशुं अने 2 થી 3 मिनिट माटे फरीथी तेने कूक करी लईशुं। तो खूब ज टेस्टी एवा एकदम हेल्दी एवो नास्तो बनीने रेडी थाय छे फ्रेंड्स। तो तमे एक वखत जरूरथी ट्राय करजो अने मने कमेंटमां जरूरथी जणावजो कि तमने आजनी आ रेसिपी केवी लागी। तो हवे आपणे तेने अलट पलट करी लईशुं अने 5 मिनिट माटे तेने बंने बाजुथी शेकी लईशुं। तो सरस एवो पुलड़ो आपणे शेकाई गयो छे। तो हवे आपणे तेने सर्विंग प्लेट में सर्व करी लईए। तो उपरथी एकदम क्रिस्पी सॉफ्ट अने एकदम ब्रेकफास्ट माटे तमे लई शको, चा नास्ता साथे बाळकोने लंच बॉक्स में आपी शको तेवो एकदम हेल्दी एवो आ दूधीनो नास्तो, दूधी अने बटेटानो नवो नास्तो। तो छे ने एकदम कोईने पण खबर नहीं पड़े कि तमे आ दूधी अने बटेटामांथी तमे आ नास्तो बनाव्यो हशे फ्रेंड्स। तो एकदम सॉफ्ट एवो अने एकदम सरस एवो नास्तो बनीने रेडी थई गयो छे।
તો તમને આજની રેસીપી કેવી લાગે ફ્રેન્ડ્સ? અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સોફ્ટ એવો નાસ્તો છે, એકદમ આસાનીથી તૂટી જાય છે. તો આવી જ અવનવી રેસીપી સાથે આવતા વિડીયોમાં મળીએ. ત્યાં સુધી બાય બાય, આવજો.